Gurve Gaurachandaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tada Bhaktaya Namo Namaha Srinandanandanam Bande Radhika Charanadvayam Gopijana Samajuktam Vrindavan Pramoda Mannalila Kandale Kandale Te Rajyati Namayuno Dandinasmin Namodam Iti Kilanatam Lagnakastadvayo Me Nijanikate Nivasam Devi Govardhan Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gauranga Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare Hare. So first of all I offer pranams to our Gurudev Krishna Padvidanti Swami Bhaktivedanta Narayan Gosai Maharaj, our Shiksha Gurus Kinchilila Parishi Govardhan Gosai Maharaj Bhaktivedanta Madhusudana Gosai Maharaj, all Vaishnavas and Vaishnavis, Dandavat Pranams. Sri Giriraj Maharaj ki Jai. So, Parvati asked to Mahadev, what is the topmost object of worship? Then generally one should not cheat one's wife. That is general. Especially who one is very dear to. So Shiva said that Aradhananam Sarvesham Vishnu Aradhananam Sarvesham Vishnu Aradhanam Aradhanam Param Tasmat Tadyanam Samach. The general rule is the worship of Krishna, Vishnu, that is the topmost. Then he thought, but only one thing is higher than the seva of Krishna, that is the worship of the devotees of Krishna. Krishna's Tadyavastu, Krishna's own personal property. Tadyavastu. Why? Because our goal is not Krishna, our goal is service to Krishna. Prem Pumato Mahan. Our goal is Prema, our goal is not Krishna. Our goal is Krishna Prema. So Krishna Prema comes from where? This not comes from Krishna. Krishna does not have devotion for himself. So Krishna cannot give that. But devotees can give. Devotees can give what even Krishna cannot give. So many times Krishna we see Mad Bhakta Puja Adikam. Krishna says the worship of my devotee is higher than my worship. So Krishna wants to show this, and in Braj he shows so much. Stitagrevam Damo Dharam Bhakti Bhajam, he's showing, I'm bound. Yesterday he was bound and still bound by Mother Soul. Krishna today showed the glories of Giriraj. Really, Kartik, how many pastimes happened? Yesterday was Krishna bound. Yesterday Krishna lived. Today Krishna lifted Govardhan. So many pastimes in this month of Kartik. So Krishna wanted to show, when he lifted Govardhan, Krishna showing the world, where can I be found? I am found under the shelter of Giriraj. I am there with my devotees. So, some new people are here, trying to keep them awake. Nilambari, stay awake. No one listens like this. Okay, so some new people are here, some old people are here. So when we finished Govardhan Parikram, everyone was very tired. So we not actually got too much of a chance to speak about Govardhan Tattva. Who is Giriraj? So we heard Bhagavatam says, Yagopika Purudito Haridasavaj. Giriraj is considered the topmost servant of Krishna. Haridasavaj. Why? Everything he has, number one, he's in Vrindavan. Other Haridasas like Uddhav and Yudhishthira Maharaj just visit for a while. But Giriraj always here. He is like the tilak of Vrindavan.
Just like it said, if you see anyone's forehead without tilak, therefore that it's the same as looking at a crematorium. So tilak is considered the ornament of the body. So Giriraj, he's like the ornament of Braj. How he's like a cow. Cow went sleep, and she put her face into her stomach, or like a peacock. So Giriraj like that. He has two halves, and his eyes, Radhakund and Shamkund. So, many ways we can worship Giriraj. Many, many ways. We heard already he's no different than Vishnu. Some think we should worship him like Krishna because he's Bhagavan. And all these things considered, but we should think that to worship him as devotee will be the highest. Okay, Giri, sorry to keep you away. Ultimately, who is the best devotee of Krishna? Who is that? Radhika. So sometimes Guru Maharaj would confidentially say, one verse from the Shruti says, Govardhan manifested from Prakriti. Prakriti not means material nature. Prakriti means Pada Prakriti Radhika herself. Giriraj, in its highest sense, he was manifested from Radhika, not different from Radhika. But still he is devoted. And he is the witness of all Krishna Leela. Just like we heard the gopis, they go to tell Madhya Yasoda, Krishna did this, Krishna did that, Yokanaya did this. But many pastimes, even Yasoda and the gopis of Vatsalya cannot have knowledge of. And those most confidential Nikunja unit and Nikunja Leela, Govardhan witnessing all that. Guru Maharaj one time gave a funny example. Anyway, so Govardhan is devoted. Guru Maharaj one time said, if you go in the bathroom when you're alone, then you can take off all your clothes and take bath, no problem. Because no one watching. So Guru Maharaj one time said, because the gopis, how will do pastimes with Krishna alone in solitary place if someone else, if some male is watching. So for all these reasons, Guru Maharaj would say, Giriraj definitely has some feminine aspect. So Govardhan, topmost devotee, he is always here. He is the eternal paraphernalia of Vrindavan. Just like Krishna always had peacock feather, Krishna always had flute, Krishna always had Radhika. So Krishna always had Vrindavan, in the same way Yamuna, Govardhan always here. But sometimes he have also appearance and disappearance. So many Kataras there, Sadhu Maharaj was speaking a little bit the other day. So there was one Pulasta Rishi, one Sadhu, he was living in Varanasi. Varanasi is flat, plain. He thought, if I could have some mountain, my ashram would be very beautiful. So he went to the Himalaya and asked, give me one donation, give me one of your sons. So Giriraj volunteered. Giriraj means king of mountains. Giriraj. So he volunteered, but he said, I will go on one condition, if you put me down, I will not come up again. So Pulasta Rishi agreed, and he was carrying Govardhan through the air, but Guru Maharaj said, Yogamaya attacked his bladder. I have to pass water. So without thinking, he put, when he came over Braj, then Yogamaya arranged this. Pulasta Rishi had to go to the bathroom. Otherwise, in Satyuga, they can perform austerities for hundreds of thousands of years. So without Yogamaya's intervention, why Pulasta Rishi have to go to the bathroom? So without thinking, he put down Giriraj, went and did his business, came back, but could not lift Govardhan. Then he became very angry. Oh, Govardhan, come on my hand. Giriraj said, remember your promise. I will not leave from him. So Pulasta Rishi cursed Giriraj to shrink one mustard seed every day. But Guru Maharaj said, really, this is external. Why Giriraj shrinking? Because Kali Yuga is so sinful. Kali Yuga is so sinful. Everyone who is not drinking, who is not eating kebab,
who is not doing rubbish. Well, few devotees, but apart from that. So when these sinful people come to the holy place, just like we see some sinful person, we feel like on the train if some drunkard comes and sits next to us, how we feel. So the holy places hide in Kali. You see Yamuna shrinking. In summer she's like this. Giriraj shrinking. So actually Giriraj hiding from sinful population. Also he feels separation from Krishna. So he manifests and unmanifests like this. So 5,000 years ago, 5,220 years ago, actually 2,214 years ago, today, Krishna decided to glorify Govardhan. Sometimes it seems devotees, their glories are hidden. They remain pushed down, suppressed, hidden. But when Krishna will lift someone, who knows what will happen. So Krishna decided to show the glories of Govardhan. Many reasons Krishna had for performing this lila. So before, all Brijavasi were performing this worship of Indra, the rain god. So they're just like they're cooking many preparations, hundreds and hundreds. So Krishna was only 7 years old. So he asked Mother Yasoda, "What's going on today? What festival? Is it someone's birthday? Maybe it's my birthday." But Mother Yasoda very busy. Too busy for Krishna's service for Krishna. You think by this Indra will be blessed and Krishna will also be blessed. So, I have no time, get out. Also baby cannot go in the kitchen picking nose and all these things. Or outside. Go and tell your father. So Krishna went to Nanda Baba, "Oh father, one who is very dear, you should not keep any secrets." Yes, it's true. "Father, tell me, what festival is today?" "Today is Indra Puja, my son." "Oh, why do we worship Indra? Is this speculation or is this in parampara?" Krishna also, only 7 years old, but he know about parampara. No, my son, my father did, his father did, many generations of gopas we did. Why we worship Indra? Because Indra is the presiding god of rain. Padajanya, the god of rain. Therefore, we depend on rain. Rain comes, it goes in the grass. Hey! Grass grows, cows eat grass. We get smitana, pani, and many things. So he is our worshipful deity, he is our maintainer. Then Krishna thinking Brijavasis are the guru of everyone. And in Bhagavad Gita, Krishna forbids the worship of the demigods. Narottam Thakur said, "Rishikesh Govinda Seva na puji devadeva." Those who worship Govinda, Rishikesh, Krishna, no need to worship anyone else. No need to worship any deva or demigod. No need Ganesh, or sun god, or Shiva, anyone. Just like you put water on the root of a tree, all tree is happy. There's no need to water each leaf and twig separately. So Krishna thought if Brijavasi worship Indra, then what will happen, Giri? This will become one parampara. Also Brijavasis are exclusively my devotees, which have not felt happy their affection going somewhere else. Many reasons. So for the benefit of the three worlds, Krishna spoke something against Indra Puja. "Oh Baba, a chaste woman who gives up her maintainer, her husband, and worships someone else, she becomes prostitute. She becomes without shelter. So who is our real shelter? That is Giriraj. We are Vaishyas, we are the cow-herding community. And Giriraj supply everything. Grass, water, fruits, roots, minerals, caves, cool air. In summer, right, the caves of Giriraj cool. In winter, hot, warm. So Giriraj maintains everything. He is giving everything. Then Krishna spoke some words against Indra. But
is it true that one gets rain by Indra? No, one gets the result of karma. Like Australia, no one ever heard of Indra, but it rains in Australia. The ocean never worships Indra, but it rains on the ocean. So Indra, what is he? He's nothing. Karma is everything. Krishna, many things speaking. Krishna's voice so sweet and also bewildering. Brijavasi want to please Krishna, especially Nanda Baba. Yes. We will not worship Indra. Today we will worship Giriraj. So as Indra was extending his hand for the kachori and samosa, the plate was removed and given to Govardhan. So today all Brijavasi did big worship. First of the Brahmanas, the Vaishnavas. That is the first worship of deity. Then cows. And this all dear things to Krishna. So all Brijavasi then offered these millions and millions of preparations to Govardhan. Who can count the mountains of samosas, ponds of sweet rice, buckets of dal, thousands of varieties of sabjis. So what water coming, cannot speak. So many drinks, 4 types of foodstuffs, licked, chewed, drunk, and sucked. 4 types of foodstuffs to be done. And soaps full of ghee, full of all these dairy products. Then they are offered to Govardhan. Then Govardhan took a huge form. Gurudev said with thousands of arms. Some arms were short, just to eat the preparations in front of him. And some arms were huge, 1-2 miles, to reach the back preparations. So how astonishingly this form of Giriraj looked like Krishna, because Giriraj is Krishna also. So all Brijavasi were like amazed. Giriraj, he looked like you. Krishna, he looked like you. Yes, Krishna, I'm Brijavasi, so some resemblance must be there. Then Giriraj eating everything. Millions and millions of kilos, millions and millions of preparations. If you read this Kavi Kanapur described, Giriraj would take just thousands of liters of sweet rice and just drink like this. Everyone became astonished. Especially Krishna said many years he worshipping Indra, father, but Indra ever one time directly manifest and took. And Nanda Baba said, I never saw Indra face to face many years, but Krishna said, just see Giriraj, first time he gave darshan. He's so merciful. Everyone became blissful, astonished, except Madhavangal. They said, actually I preferred Indra Puja, at least we got some prasad at the end. But Krishna, your devata, he took everything. Nothing left for us. Then Krishna smiled. Don't worry, Giriraj always gives more than he takes. Not like us. He always gives back, double, triple. So everyone closed their eyes. Giriraj will give mercy. So when they closed their eyes, really what Krishna said, all prasad came back double. And Madhu became, from that day, great Giriraj Bhakta. For every year we should do this puja. So with great happiness, all Brijavasi, Krishna with his own hand distributing prasad to all Brijavasi, own hand. Then even Krishna gave to cows, dogs, birds, insects, not to speak of Brijavasi. Then in great ecstasy, all Brijavasi taking their bullock carts and all cows, and they did Govardhan Parikram like we did the other day. In great ecstasy, chanting, Govinda Mera Gopal Mera. In great ecstasy, Brijavasi did this Govardhan Parikram. So Indra became very angry, very disturbed. Number one, Krishna says in Gita, one who is respected and disrespected is worse than death. So many years Guru Puja, then next year nothing. This feels so much shame, pain. Also Krishna had abused him a little bit. Krishna stopped his puja, Krishna spoke some few words against him. And all Brijavasi following this Krishna, so Indra became very angry. And bewildered by pride, bewildered by false ego, Indra began to abuse this Krishna.
Who is this Krishna? Pandit Manina. He thinks himself to be a very great, learned person, this Krishna. But who is he? He's just Mrityabhuta. He's just an ordinary guy, some cowherd boy. Vachalam, this Krishna talks too much. Stabda. He is very proud. And this way Indra spoke many, many bad words against Krishna. But actually Saraswati, the goddess of learning, cannot tolerate. So all these meanings also true. Krishna is stabda, proud. Why? There is no one else except Krishna in the creation. Whatever we see moving or non-moving, what is that? Krishna. Maya tatamidam sarvam jagadavyaktimotidam. Krishna says, I pervade the entire creation. The creation is me. It's not separate. So who Krishna do pranam to? Sugananda. There's no one else in the creation except for Krishna. Who Krishna bow to? There is no second person. Ekameva dvitiyam. Shruti said, there is only one without a second. So, Pandit Maninam means those who are real learned persons, they Manina, they accept Krishna. Who so-called scholars who not worship Krishna, they are fools, ignorant, murka. In this way, everything, what Indra said, this was actually true, but not in the way that Indra meant. So Indra became very angry. So it said at the end of every Manu, there's a dissolution, a flood. So that time, even though it was not the proper time for dissolution, Indra was so crazy with anger, he ordered the Shamantak clouds, finish Braj, kill all the cows, smash the bridge buses, especially drown Krishna. Sambat. Means kill Krishna, kill all bridge buses, kill all cows. Even no demon tried that, actually. No demon tried to do this. Indra is so much proud, so much angry. Alone he tried to do all this. So Indra's offense was very great. 7 days, a huge rain came. Like when a drop of rain comes, how big is it? This big. Like a quarter of a centimeter maximum. But these raindrops were thick like the trunk of an elephant. Imagine a raindrop like that. Heavy lightning, wind was there. The cows became cold because heavy wind. They tried to protect their calves by shielding them with their bodies. All Brijavasi became afraid, especially Madhumangal again. Kanaya, now look what's happened. Because of you, because of listening to you, now we'll all be finished. All Brijavasi will be finished. Then Krishna said, don't fear. Giriraj accepted our worship. Giriraj will protect us. Have no fear. Come, come. So all Brijavasi, all cows came and Krishna lifted Govardhan on his fingernail of his left pinky. Bhaktivedanta Swami Maharaj beautifully said, Krishna said, smashing Indra is the work of my little fingernail. Means very easily Krishna lift up Govardhan like an elephant lifts up a mushroom. That time Govardhan was 12 miles high. 60,000 feet high. Imagine. 12 miles. 60,000 feet. Even aircraft, jet engines don't go that high. We are now cruising at 30,000 feet. Krishna, that's the size of Govardhan. That's why he's called Giriraj. And Krishna lifted him up like an elephant lifts a mushroom, very easily. Then Krishna called, all Brijavasi become astonished. Krishna called all Brijavasi, come, come. So when they came underneath, they saw Govardhan was full of all facilities. There were rooms, sofas, fridges, food. Everything was wonderful. Crystal walls, diamond floors, gold, streaks of silver, all very beautiful and wonderful. So Brijavasi had a festival for 7 days. Especially gopis, because before, how can they look at Krishna? Imagine one gopi looks at Krishna, husband, hey, what you doing? Mother-in-law and father-in-law chastise,
The gopis never get chance for fearless darshan of Krishna. But today is emergency. In emergency, rules don't apply. Like, brahmachari should not catch the hand of a lady. That is general. But if there's a fire, and Singagriv runs and grabs Srimati by the hand, come on. Will anyone criticize? No, because emergency. So gopis, 7 days and 7 nights looking at Krishna, especially Radhika, so happy. Krishna also lifting, playing flute sometimes. So Mother Yashoda would see. And because Vatsalya, she proof Krishna is God, look. But still she see the proof but still not feeling. So Mother Yashoda would chastise, you foolish boy, look what you've done now. Now because of your foolishness, now all this trouble has come. She saw Krishna not eating. So Mother Yashoda said, give that mountain to me and go and take lunch. Krishna come from my womb. If he can lift, I can lift also. Give me that mountain and go and take lunch. No, Mother, I'm not feeling any difficulty at all. By Govardhan's mercy, very light, like cotton, like this. So Mother is sort of feeding him like this. The coward boys also laughing, but they think how Krishna could lift without us. So they, with their big cow, you see even today in Braj, the coward men have big sticks to move the cows like. So coward boys put there, Navina still awake. Oh my God. So coward boys like this lifting. We go that more weight on Navina's eyelids. So all coward boys lifting. Okay, can I take a break? I've got it now. Coward boys think we are also doing it. Madhumangal think this Kanaya, he is lower born, how could he do? So Kanaya, so Madhumangal chanting mantra. My Gayatri is lifting Govardhan. So Nanda Baba thinking, oh yes, on the Ryan, my son is very foolish, please protect. So Nanda Baba thinking, Krishna's, Bhagavan's power, enter Krishna, then he doing all these things. But Guru Maharaj said, really, who lifted Govardhan? Radhika. Radhika by glance looking at Govardhan. Hey Govardhan, you give my beloved even one drop of pain, I will smash you to pieces with my glance. So out of fear of Radhika, then Govardhan floating like a piece of cotton. So Indra so much pouring on the rain, 7 days and 7 nights, but Brijavasi feeling one festival, one happiness. No discomfort, no nothing. 7 days of bliss, 7 days of ecstasy. Indra came because his rain tanks were empty. The Samantak clouds crying, we cannot do any more, and Indra was whipping them with his thunderbolt. More rain, more rain. Like Sadhu Raja Mohan. Give me the gold. So Indra with his thunderbolt cracking on them. Clouds, give me more rain, but no. Finished. Then Indra thought, I've been smashed. Who is Krishna? Then he understand. Took him 7 days. Then he understand who is this. He wanted to offer prayers, but he's afraid. Maybe Krishna will Sudarshan Chakra. Because big aparad. So sometime if one's in trouble, one should take shelter of some high devotee. Many times if Gurudev was angry with us, we would go with someone else. Someone who wouldn't have liked too much. Then Gurudev's anger would little disappear. Many stories like that. So Indra not went alone, he went with one cow, Surabhi cow. Then Surabhi said, this guy is Indra. Indra means king, king of the heavens. But Surabhi said, how this Indra can be our Indra? He tried to kill us. So who is our real Indra? That is Krishna. So Krishna got new name. Good guess. Govinda. Krishna is the Indra of the cows, of the gopis, of Govardhan. So what happened? We will hear in modern days, Madhavendra Puri did this same worship, and today we are also doing here.
I remember Gurudev's time I would do Govardhan Puja there and then come here in the afternoon for second Govardhan Puja. Didi would cook like, there would just be me and Maharaj and we would take like 100 preparations. So we also, Govardhan fulfill any desire. What you want, you give. So what you want, Kunja? Oh no, don't tell us. We should be very careful. Under shelter of Guru Vaishnava, we pray. I just want one thing, my seva in branch, my seva to Radha Krishna. If you want anything else, then Govardhan will cheat you, fulfill your desire. So Giriraj Maharaj ki jai. ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे दूरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्धायमन्त्रिरमला हरिदासवर्य रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोद मानवधराज सभागमनयस्तयोर्यत्पनीय स्वयवसकन्दरकन्दमूलये प्रमदमदनलील कन्दरे कन्दरे चिरचेतिवयुवा अस्मि नमन्दम् इति किल कलनात्मलग्नकस्तद्वयोर्मे निजनिगतिवासं देहि गोवर्धनाथम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द प्रस्फुरिष्य Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Still not everyone's awake. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. First of all, unlimited and pronounced to lotus feet of Shiva Gurudev, Nikira Prishna, Vishnupad, Shishimad Bhaktivinoda Narayan Goswami, Shiksha Gurudeva, Om Vishnupada, Srudrasate, Shimad Bhaktivedanta, Madhusudan Goswami, Narayana Krishna, Priyata Purana, all Vaishnavas and Vaishnavas, Sripata Magar Maharaj, Vidandava Pranams. So today is a very, very blissful day. Today we will be glorifying Giriraj Maharaj, right after Krishna, following Krishna's footsteps. He was glorifying his dear devotee. He raised him aloft. He was holding for 7 days and 7 nights to show the world that he is the highest, he is the best. Giri Raja means the king of all mountains. So the place where it happened, actually it said that Haridev, the deity, the presiding deity of Govardhan, one of the 4 devs, visited Keshavadev and Mathura. He wanted to visit but failed before Kartik. Dawaji Maharaj in Dawaji, that's Baladev. That's Govindadev in Vrindavan, which is by his side, and Haridev in Govardhan. So that is the very place where Govardhan Lila took place, where Krishna rose Govardhan. But also there's a village called Anior. We passed that village. It's close to Govindakund. So Anyara means give more food, give more grains. So Maharaj was mentioning the aspect of Bhakta Swarupa, that Giriraj is still a devotee. It actually has 2 Swarupas, Bhagavad Swarupa and Bhakta Swarupa. So for us, Bhakta Swarupa is more important, because devotee can give prema. Devotee possesses prema, and devotee is able to give prema. So that's why we're coming to Giriraj Maharaj. We're begging for Raja Prema. Please bestow that precious gift for us. Priceless gift. So that's why Bhakta Swarupa is more important. So Giriraj Maharaj was there, and when all the Brijbasis
under the guidance of Krishna and Nanda Baba, they offered so many preparations. Maharaj was discussing how many preparations. So with 4 hands, actually with thousands and thousands of hands, he was taking that. But he was in his 4-handed form. And then he exclaimed, Anyore, Anyore, means Anyo, means give more grains, give more food. And then they were giving more and more and more and more and more. And finally they gave so much, they gave everything, so he became satisfied. So he said, Driptosmi, I am pleased, I am satisfied. Driptosmi, Driptosmi. I remember how in Baja, Srila Gurudev, Srila Bhaktivinoda Narayan Goswami Maharaj, in his new Braja farm, established Giriraj Maharaj there. He established. Let there be Giriraj. There are so many mountains which are like Giriraj Maharaj. And Gurudev said, oh, this one, Giriraj Maharaj. So every year, so many devotees, in the same way as in Braj, in Govardhan, they were carrying on their heads so many preparations to satisfy Giriraj. And then Giriraj was exhibiting his forearm form. He was an actor, certainly, exhibiting forehand form, the dark complexion, and saying, Anyore, Anyore. And then when he was accepting so many more preparations at the end, he was saying, Driptosmi, Driptosmi, I am pleased, I am satisfied. So that's why the place is called Anyor. So Indra at the end took shelter of Surabhi, we heard. Surabhi is a celestial cow, and she is like a mother. So they approached Krishna together. Indra took shelter of mother. When you are punished, as we heard from Maharaj, you took shelter of someone who is very near and dear, so that that personality can say a word to our beloved guardian, main beloved guardian. So in Russian we say zadobrit, means to say some good word. So Surabhi was accompanying Indra, and Surabhi therefore is able to forgive any offense. I mean, she can, a bath in Surabhi Kund can neutralize any offense. That's why we evaluate Surabhi Kund so much. When we go around Giriraj Govardhan, then we stop at Surabhi Kund. Used to stop with Srila Gurudev, and Srila Gurudev's follower from Mathura, I think Dr. Sanjay, his name was, he made new ghats all over Surabhi Kund. He decorated Surabhi Kund very, very nicely. So this year, the whole group was not able to stop there, but I was lucky with my supersonic speed. I reached it. The Maharaj was there, so together we worshipped Surabhi Kund. And Narayan Baba, the famous Gurudev's follower, was there. So we sat together and had a nice conversation. So then Maharaj left. So it's Surabhi Kund. So then, as we go around, so I'm reflecting our Govardhan Parikrama, because there was 1 or 2 Harikathas only at that time, because we were in a hurry to return to Vrindavan on time. So on the opposite side of Aniyor, so when we go around Govardhan on the first half, there's Aniyor. And on the opposite side, there's another village called Jatipur. Jati means sannyasi. So that name is given after Madhavendra Puripat. So Madhavendra Puripat lived there, and he was performing solitary bhajan. I'm sure Maharaj will tell this Leela, and I will tell maybe in brief. So Madhavendra Puripat was not caring about whether he receives donations or not, whether he receives something or not. So he was performing that kind of bhajan. So once Maharaj showed, in Krishna Balaram, we are like this. We're like Madhavendra Puri. We are performing that kind of bhajan. So when somebody gives us something, very good. When somebody doesn't give, also good. So you can notice there is no donation box, like public donation box. Okay. So that's the principle. Madhavendra Puri. We're never supposed to follow anything else like this.
So Madhavendra Puripad was like this, Radha Krishna Pranamur, Yugala Kishore, Jivana Marane Gatiya. Some death may come, we don't mind. We live and we serve Radha and Krishna in life and death, in famine or in abundance of food, we don't mind. So Madhavendra Puripad was satisfied with whatever was coming. And well, if a feast comes to a sadhu, then the sadhu takes a little bit of every preparation. Not overeating, no super sumptuous. So Madhavendra Puripad was like this, and Krishna noticed that. Krishna noticed that, and he came in the dead of night as a little boy, blackish complexion boy. Madhavendra Puripad already was quite tired, so he was about to sleep. But before that, Krishna came in the form of a little coward boy, and he said, Baba, in our Braj, nobody is starving. I can see you're not taking any food. Look, my mother gave this cup of milk for you. So Krishna brought that, what's it called, dona type of cup made of leaves. Please have this. And I'll come back to pick up the cup. And Krishna went on. Mother is waiting for me. So then Madhavendra Puri took that milk. He was totally ecstatic. He was totally immersed in trance. He was saying, oh, why am I thinking of that boy so much? He couldn't recognize Krishna by Yoga Maya's arrangement. He could not recognize Krishna. I'm keeping thinking of Krishna. Why is that? And pondering, he didn't notice how he fell asleep at the dead of night. And that same boy came to him in a dream. And he said, listen, Madhavendra Puri, my name is actually Gopal. I'm staying here. But I'm staying in the bushes. I'm very, very hungry. Very, very hungry for a long time. Nobody has given me any food. I'm very thirsty. Nobody has given me any water. So I'm staying here in the foothills of Govardhan. I was hidden in the bushes by Pujari because he was saving me from Muslim invasion. So please take care of me. Please take me out of here and take proper care of me. I'm hungry, I'm thirsty like this. So Madhavendra Puripad was very overwhelmed when he woke up. He collected all the residents of nearby village and asked them, oh, please take spades and dig the ground. And when they started digging, after some time, they saw a very wonderful deity of Gopal. Shri Gopal Ki Jai, Giridhari Gopal, that Krishna who lived in Govardhan. So as we were walking, I don't know if you're walking around Kunda or you turn probably right, but there's a deity which is no different from the original one. The original one is somewhere in Rajasthan in Natadwar. Recently visited, I still haven't visited, but you have to take train and then take bus. It's a bit long way to reach that deity, original deity of Giridhari Gopal in Rajasthan. But that deity is no different, so now a new temple is being built. And there's also a deity of Madhavendra Puri, Murti of Madhavendra Puri, just next to Vrindavan. So you heard that Indra and Surabi called Krishna Govinda, coronated Krishna as Govinda. But Madhavendra Puripad was then so overwhelmed. He was so happy. That is Gopal, that is Gopal, that is the same boy who had come to me in a dream. So out of very special affection for their devotees, deities come and personify form. Like if you remember the story of Sanatana Goswami. Sanatana Goswami was serving Madan Gopal first, then Madan Mohan. So then he saw him as a little boy, as a friend of Chauvin Brahman, son of Brahman. So then Madan Mohan followed him and came to Vrindavan. So in that same way, Gopal came in a dream to Madhavendra Puri, and then Madhavendra Puri discovered him. In the same way, Krishna came to Srila Rupa Goswami. Rupa Goswami was sitting
by the side of Parikrama Marg, very, very pitifully he was crying, oh, I cannot serve Govinda. Where is Govinda? So then Govinda came to him. He was following down Parikrama path, and he said that, oh, I'll help you. And then he brought Rupa Goswami to the hillock where the cow was automatically giving milk, the milk was oozing from her udder. So in these three cases we can see how deity talks to the devotee and comes. So then immediately Madhavendra Puripat organized a great feast. So many types of preparations were arranged. So like during Govardhan Puja, no less probably. So there were mountains of rice, hills of rice, and kundas of dal, and there were piles and piles of samosas, pakoras, and all kinds of chutneys, all kinds of preparations of all kinds of also in the same way as during Govardhan Puja. And there were so many sweetmeats, type of drinks, lassis and this and that, and sandesh, everything. So then Giridhari Gopal was very, very pleased after that feast. Cutting the long story short, as Maharaj is supposed to come, I think. So then Giridhari Gopal came in a dream to Madhavendra Puri. He said, oh, actually, I was very, very hot while staying in Vrindavan under the hot sun for so long. So please bring from Malaya mountains, bring some sandalwood paste, some chandan. Please go there and bring the chandan for me. So he went. A long, long journey he made. Malaya mountains is somewhere to the north of Orissa. And he was returning. After he had collected some, he was returning, and there's a town on the border of Bengal and Orissa, actually in the territory of Orissa. It's called Remuna. So in that Remuna, there's a very, very special deity of Gopinath. So Madhavendra Puri saw Gopinath, and he was so much mesmerized. He looked so much like my Gopal. And he noticed that the priest in that temple offer a very, very special type of sweet rice, which is called Amrita Keli. Who has been to Remuna? Okay, some devotees have. It's a wonderful place. The Samadhi of Sri Rasikananda is there. I think today is his appearance day. Or disappearance day, Sri Rasikananda. There is a disappearance day, we can discuss tonight. But it's very good that I mentioned this story, because it's Rasikananda's place, his Samadhi is there. So when Madhavendra Puri saw that wonderful Amrita Keli, he could think, the only thing he could think about, oh, I would like to taste that sweet rice. So I want to prepare the same Amrita Keli to my Gopal, Giridhari Gopal. And then he caught himself at the thought, oh, I'm an offender. I wanted to taste the preparation before it was offered, because at that moment Pujari was just carrying the preparation to be offered to the temple room. And then then Madhavendra Puri was so much overwhelmed, he was thinking, oh, I'm an offender. I have no right to stay here. And he went out, he spent the night at the marketplace. There at that same marketplace area is his Samadhi. So then at midnight, the deity of Gopinath came to Pujari in a dream. And he said, oh, actually, you know what? At the marketplace, there's one great devotee, Madhavendra Puri. He's spending night there. And he wanted to taste my sweet rice Amrita Keli so much. And I actually saved some of Amrita Keli in the temple room. You immediately enter the temple room and you can see, you can find there Amrita Keli rice, 1 cup. I especially heat for him. So the Pujari woke up and he was shocked. Oh, the deity is speaking this thing to me. Immediately I have to unlock the temple room and come in and see. So he came in, and behind the curtain he saw that exact cup the deity was talking about. He took that cup of Amrita Keli and he brought that cup to the marketplace at night. Who is Madhavendra?
Who is Madhavendra Puri? Who is Maharaj? Who is Madhavendra Puri? Who is Madhavendra Puri? Is there anyone by the name Madhavendra Puri? So Madhavendra Puri woke up and somebody's calling me. Who is that? Oh, you're most lucky person in the three worlds. Pujari said, you're the lucky most person in the three worlds because the deity saved sweet rice for you. A cup of sweet rice was saved especially for you, so please take it. So then Madhavendra Puri Path was just taken aback with the news. He was immediately he took that sweet rice. Immediately. There's a regulation when you take Mahaprasad, you take it in any condition. Unless there's a Kadasha fast. So take immediately. So he took immediately all Mahaprasad and only the cup was left. So he crushed that cup to little pieces and he took it into a piece of cloth and he tucked it on his waist like this. So then he was very much afraid. Madhavendra Puri was very much afraid that his name and fame will catch him at every moment. Everybody will know him, everybody will start glorifying him. Oh, such a person, such a great devotee. The deity came in a dream to Pujari and told the Pujari to save some sweet rice for that devotee, Madhavendra Puri, so he left the place immediately. Before dawn, he left and he went to Jagannath Puri. So, we're not shall we stop? Somebody else will speak. Maharaj will come. So, we remember Sri Madhavendra Puri Pad's Leela. Such a great devotee, the Param Gurudev of Sri Chaitanya Mahaprabhu himself. So, also his devotion to Giridhari Gopal is exemplary for us. Sri Madhavendra Puri Pada Ki Jai, Bola Giriraj Maharaj Ki Jai. And also tonight, I think there's disappearance there. Rasikananda today will glorify him. When you want to speak about it. Chitananda Prabhu will speak. Govardhan. Join the fight? Yes. Take some letter. Namo Brahmane Devaya Govardhan Devacha Jagat Krishnaya Govindraya Namo. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So first of all, I offer my obeisances to the lotus feet of Hospital Master Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, Sannyasigan, Vaishnavas and Vaishnavas President, So today is a very auspicious day. This is Hanuput festival, and we hear how Maharaj gave a nice explanation of how the Govardhan Lila took place. But actually, Bhagavatam tells that actually the intention of Krishna was to smash the ego of Indra. That's why he changed the sacrifice. Because this tradition of offering to the sacrifice to Indra was for many years. Brajavasis were doing this. So question coming, why Indra wants to change the sacrifice? Krishna. Why he wants to smash the ego of Indra? So we can see that in Bhagavatam there are so many instances, examples of how Indra becomes so proud, and therefore, when one becomes proud, then it leads to confusion. You get your mind is confused, and you cannot understand what is right, what is wrong, who is sadhu, who is not a sadhu, and the effect, the result of that is that you make aparat. This is the result. So, we see many times, for example, one time Indra, he was
sitting in his assembly, and they were all Gandharvas and Apsaras dancing and singing, and he was surrounded by so many demigods. So he was sitting on the throne, and by his side was his wife Sachi. So he was enjoying, he was getting so much respect, so much pratista, so he was like, he is the king of heaven anyway. No? So it's actually king of heaven means the king of the three worlds. No? He controls the three worlds. So it was so powerful. No? And then at some point of this assembly, his guru, the Haspati, which is the guru of demigods, he came into the assembly. So he came to the assembly, but Indra was so proud, so puffed up, was so much pratista getting, that he didn't even bother to stand up or to give some respect to his guru, the Haspati. So therefore, when the Haspati saw that, then he just abandoned, he just left the assembly, and then he went to his wife. And after that, then Indra understood, oh, I've made such a big apparat, I'm actually neglecting, I'm rejecting my guru in front of everyone. So therefore, then he started to lament, no? Then he went, he wanted to excuse himself, so he was actually feeling so badly. But the husband wanted to give narration when he disappeared. But actually this was the cause, because this apparat, then actually turned into a war between demigods and asuras, and actually the demigods lost all power. So this is one of the examples of the proud of Indra. But for example, there is another one when Durvasta gave to Indra the garland of Vishnu, and Indra is so proud, just rejected and gave it to the elephant. So Durvasta was so angry for that, and then he cursed Indra. Another time as well, when there was a sacrifice, Prithu Maharaj sacrifice, so he was getting such a high position, and in fear of losing his own position, Indra stole the sacrificial horse. No? So therefore, Prithu Maharaj cannot get anywhere. So anyway, Bhagavatam shows many examples of how being envious and proud can lead to become bewildered, and then the result is to bring apparat. So actually Krishna wanted to crush this proud of Indra and teach him such a lesson. No? So therefore, all this Govardhan Lila enacted. No? It happened from this point. No? Vande Gurun Padadvandam Bhaktavinda Samanavitam Sri Chaitanya Prabhu Vande Nityananda Saboditam Sri Nanda Nandanam Vande Radhika Charanadvayam Gopi Jana Samajuktam Vrindavan Manoharam Govardhano Jayati Saile Kuladhirajo Jo Gopika Bhirdito Haridasa Varja Krishnena Sakramak Bhankrtarchitoja Saptahamasmakar Padmatale Pavadsi Saptahameva Chutahasta Pankaje Vrindayamanam Phalamulakandare Sansavyamanam Harimatma Vrindakare Govardhanadrim Shirsa Namad Anupam Manuvedi Rudratna Singhasanorva Rujar Darasanudron Sanghe Suram Sabar Sakhi Visankhelayan Swatpriyam Me
निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत शिष्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज। नितला पृष्ठो विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुरूप वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हरि की कृपा की प्रार्थना। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जता जो दंडवत। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। आज के दिन श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों के साथ में लेकर अनंत व्यंजनों के द्वारा पहले तो गिरिराज जी का अभिषेक किए और फिर भोग लगे, और इसके द्वारा गिरिराज पूजा, गौ पूजा, ब्राह्मण पूजा, साधु संत पूजा, वैष्णव पूजा, गुरु पूजा जो भगवान से संबंधित है उसका प्रवर्तन, जो भक्ति से संबंध रखता। इसलिए सनातन गोसाई पाद जी कहते हैं कि प्रत्येक वैष्णव के लिए कर्तव्य है, अनिवार्य है इस गोवर्धन पूजा सबको करना चाहिए। यदि भक्ति चाहिए तो गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन भक्ति प्रदाता है, सर्व अभिष्ट प्रदाता है। क्या चाहिए? सारे भावों को जो अपने अंदर में समा करके रखे, दास तक वात्सल्य समस्त भावों की जहाँ पर अभिव्यक्ति है, समस्त भाव वाले जिनका आश्रय लेकर के अपने भाव की पुष्टि प्राप्त करते। इसमें कोई भी भाव वाला गिरिराज जी का सब परिक्रमा करते, क्योंकि वृंदावन के मुकुट है, ब्रजवासियों के द्वारा सेवित है। गिरिराज जी अचल गुरु, एक ही जगह बैठे बैठे सब विश्व को शिक्षा दे रहे हैं, भक्ति दे रहे हैं। कहीं जाते नहीं, लेकिन कौन नहीं गिरिराज जी को जाना, उनकी महिमा कहाँ तक नहीं फैली। तो वृंदावन में मुकुट है, जो वृंदावन के मुकुट है। अगर वृंदावन एक स्वरूप है भगवान का, राधा कृष्ण का विग्रह, तो उसका सिर कौन? सिर का जो मुकुट है वो गिरिराज गोवर्धन। मुकुट ऊंचा होता है, गिरिराज ऊंचे। मुकुट सिर में होता है, मस्तक में होता है, गिरिराज मस्तक स्वरूप है। उनकी दो आंखें राधा कुंज श्याम कुंज है, कुसुम सरोवर के द्वारा सूंघते हैं, और मानसी गंगा आदि के द्वारा हरिदेव दास के द्वारा हरिदेव के द्वारा भोजन करते हैं। मुखारबिंद वहीं पे मानसी गंगा के उनका मुख है, उससे पानी भी पीते हैं, मुख से चकाचक व्यंजन पाते हैं। राधा कुंड के पास ही उनका जीवा है। सब पूरा गिरिराज जी का स्वरूप पीछे वो कुचरी है, कुचरी का लोटा। तो वृंदावन के मुकुट है, ब्रजवासियों के द्वारा सेवित। गोवर्धन अचल गुरु हरिदास ब्रज, अचल गुरु हरिदास गोवर्धन। तत्सन्निधि मम शिलाक्ष एता मनोरथा लता ससु उद्भवन। जो भी गिरिराज जी के समीप में रहेंगे, जो भी उनकी भक्ति करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, परिक्रमा करेंगे, सन्निधि में रहेंगे, उनका जो मनोरथ रूपी लता है, भाव रूपी जो लता है, भक्ति रूपी जो लता है, वो बहुत जल्दी अंकुरित होकर के बढ़ना शुरू करता है। जो भी भाव, जो भी भक्ति चाहिए, साथ साथ एकदम से गिरिराज जी के संसार में आने से जिसके अंदर का सिद्ध जो भाव है, दास तक वास्तव में प्रकट होता है। हम लोग का जो मनोरथ, जो इच्छा, जो भक्ति भाव चाहिए, गिरिराज जी से मांग सकते। गिरिराज जी भक्ति देने वाले हैं, उनसे कोई घास फूस मत मांग लेना।
जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अच्छी वस्तु मांगो, ऐसी वस्तु मांगो जो शाश्वत हो, सनातन हो, नित्य हो, जो नाशवान न हो, और जो भगवान के प्रति हमारा जो भाव है, संबंध है, शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं हो, उनका कभी प्रलय नहीं है, नाश नहीं। कपिल देव माता देवभूति से ही करेंगे, माँ मेरे प्रति जिनका जो संबंध है, भाव है, न मत पर कथिन शांत रूप न क्षंति में अनिमिषो हेति के, मेरे प्रति जीवों का जो भाव है, चाहे वो दास का है, चाहे सख का है, वात्सल का है, मधुर का है, कोई भी भाव वो कभी नष्ट नहीं, उस पर काल का प्रभाव नहीं चलता। जैसा अहम, मैं जिनका प्रिय हूँ, आत्मा हूँ, सखा हूँ, पुत्र हूँ, प्रियतम हूँ, गुरु हूँ, देवता हूँ, सर्वस्व हूँ, वो संबंध शाश्वत है। गिरिराजेश्वरी मांगेंगे। गोवर्धन धार्मिक का कई कारण है, कुछ मुख है, कुछ गौण। गौण रूप में तो इंद्र के मान मर्दन करना चाहते हैं, ये कृष्ण के लिए कोई बड़ी बात है। इंद्र को और भी किसी प्रकार से मान मर्दन कर चले, सीधे जाकर 2 थप्पड़ भी मार सकते हैं। एक बार स्वर्ग में चले गए पारिजात लेने के लिए सद्भामा के साथ, और इंद्र आनाकानी किया तो 2-4 लगा दिए, चिल्लाने लगा, बाप बाप ले जाओ, मारो मारो। तो ऐसे सीधे भी शासन कर सकते हैं, लेकिन एक साथ अगर सब काम बनता हो, एक लीला में 5-7 काम हो जाता हो, तो कौन इधर भागे? तो सोचे ही बैठे बैठे सब काम करते। मूल कारण था पूर्व राग के बाद जो वेणु गीत में गोपियों ने जो अपना राग दिखाया, अपना भाव बंसी के वेणु के माध्यम से अपने भाव की उस प्रेक्षा, उस सूखे बांस के लकड़ी पर करते, टुकड़ा करते। अरे मुरली तूने कौन सा ऐसा तपस्या किया? तो सब समय गोविंद के, मधुसूदन के आदरों पर सदा अधर मुखलाड़ी, अधर के रस के आदरों पर बैठे रहते, बढ़िया से गद्दा और तकिया लगा करके, और कृष्ण तुमको ऐसे से चापते रहते छिद्रों में, आंखों से पंखा करते रहते हैं, मुक्ता खेलना मन चमर। क्या तुम्हारा पुण्य? बाहर से तो कुछ तुम्हारा अच्छा दिखता नहीं, कितने छेद हैं, बांस का टुकड़ा है, सूखा है, नीरस है, गांठों से युक्त है, फिर भी इतना स्पर्धा करते, कृष्ण के साथ में लग के चिपक के रहती है। तो जब सोते हैं तो हाथ रख कैसे पकड़ के सोते हैं, चलते समय कभी कमर में रखते हैं, कभी यहाँ रखते हैं, कभी इधर रखते हैं, कभी सिर पे भी रख लेते हैं, कहाँ कहाँ तू नहीं चढ़ती। सखी मुरली विशाल छिद्र जाने में पूर्णा लघुरति कठिना गणि खिला नीरसासी तत्ति भस्ति स्वस्व चुमनानंद सांद्रम हरि कर परिणाम तेन पुण्योदयन। बाहर से तुम्हारा कोई पुण्य तो दिखता नहीं, अच्छा काम किया होता है तो बांस क्यों बनता, सूखा काटा गया, टुकड़ा किया गया, आग में तपाया गया, कितना सर्दी गर्मी सहा, कितना कष्ट पाया, उसके बाद भी तुमको छेद किया गया, फिर भी कृष्ण के इस प्रकार जो अपनों के पूर्व राग अपने हृदय के भाव इन बंसी मोरों के माध्यम से, हिरनियों के माध्यम से, गाय बछड़े जमुना जी गिरिराज के माध्यम आदि से जो प्रकट किए, हंताय मदरी हरिदास बरजो जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सबो गणयोस्तयोर्जत पानीय सुजव सकंदर कंद मूल। ये हरिदास आप तो महान श्रेष्ठ भक्त हैं, आश्चर्य। सखी हमें गिरिराज की तरह कब सौभाग्य प्राप्त हो? गिरिराज स्वच्छंद स्वतंत्र कृष्ण को स्वागत करते, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, तो उसका सास है न ससुर है न कोई पति है, कोई नहीं, जब मर्जी कृष्ण को अपने पास बुला लेते, कोई रोकते नहीं। आज हमारे कंदरा में सो के रहो, हजारों कंदरा प्रकट कर देते, हजारों मणियों का वेदी, सिंहासन, झरना, पत्र पुष्प फल जल घास तीर्ण
सब सुविधा प्रदान करते। सखा लोग, गौ, बछड़ी और जो उनके प्रियजन है सब उसका आनंद मानते। कितना सेवा करते। और कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके कभी कृष्ण शिला पर अपने हाथ रखते, कभी बैठ जाते हैं, कभी इसके छाती पर घूमते हैं, चलते हैं। उस स्पर्श से बड़ा प्रमोदित होता है। शायद काश हमें भी गिरिराज जैसा कोई सौभाग्य होता है, हम भी ऐसे कोई रोकने वाला न हो, कृष्ण के साथ हर समय से घूमती फिरती रहती, उनके संग में लगी रहती। इस प्रकार जो अपना पूर्व राग का जो उनका जो भाव था, उसके सिद्धि के लिए और कत्यायनी व्रत आदि में उनको जो वरदान आदि दिए, उसके पुष्टि के लिए, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए इन्होंने गिरिराज धारण लीला की। मुख्य कारण नहीं, जिससे एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि 7 दिन तक गोपियां ने संपूर्ण ब्रजवासी, गोपियां तो मूल है ही, मुख है, कृष्ण के साथ एक साथ बिल्कुल पास में जाके खड़े हुए, उनकी ओर देखे, स्पर्श हुआ, आंखों आंखों में कितनी बातें हुई, कितना भाव प्रकट हुआ, इनका और प्रेम ऊपर को बढ़ते चला। पूर्व राग के बाद गोपियां कृष्ण से मिलना चाहती हैं, उस मिलन को पुष्टि करने के लिए गिरिराज धारण लीला, जहां पर कोई शंका नहीं करेंगे, कोई जटिला कुटिला बाधा नहीं देंगे, क्योंकि स्थिति ऐसा है कि विपत्ति में कोई नियम नहीं रहता। विपत्ति नियम नास्ति। अगर साधारण परिस्थिति में कोई व्यक्ति यहाँ वहां खड़ा होता है, गलत जगह पर खड़ा होता है, तो उस समय आपत्ति हो जाता है, तुम ब्रह्मचारी उधर क्यों गए, तुम उधर क्यों घुस रहा है सन्यासियों के बीच में, सब नियम होता है। लेकिन अभी कोई आंधी तूफान पड़ रहा है, ऐसा आ जाए, कुछ हो जाए, तो उस समय कौन कहाँ घुस गया, कौन किसको छू दिया, कौन किसको धक्का मार दिया, क्या कर दिया, उसमें कोई नियम नहीं होता, उसमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, क्योंकि विपत्ति, संकट में कुछ भी हो सकता। तो गोवर्धन धारण एक संकट का अवसर। इंद्र मूसलाधार वर्षा कर रहा, ब्रज डूब रहा, सब बाढ़ आ गए, सब घर द्वार मकान सब बह गए, डूब गए। हम उसमें कौन नियम मानेंगे? से जो जहाँ मौका मिले, जहाँ सुरक्षा मिले जाओ। और कृष्ण ने गिरिराज उठा रखे तो सब उसके अंदर घुस गए, और गोपियां बाएं दाएं कृष्ण के पास एकदम खड़े हुए, जटिला देख रहे लेकिन बोल नहीं सकते। अगर बोला और कृष्ण ने कहीं गिरिराज जी को छोड़ा, तो गुड़िया तो सबसे पहले किसे तो डर के मारे, अरे जान बचे लाखों पाए, वो समूह अपना सब जान बचाने में लगे हुए हैं, कौन किसके ऊपर दोषारोपण करेगा। और कृष्ण को बल देख करके उसकी और श्रद्धा भक्ति विश्वास बढ़ रही, कृष्ण ऐसा है, हम सबकी रक्षा करना। तो पूर्व राग के बाद उनका मिलन को पुष्ट करने के लिए सभी और साथ में इंद्र का मान मर्दन। इंद्र जानता है कृष्ण कौन है, वो बेवकूफ नहीं। जब हम लोग गुरु वैष्णव को सुन करके जानते कृष्ण भगवान है, तो इंद्र तो जब कंस के कारागृह में कृष्ण का जन्म हुआ, जब प्रादुर्भाव हुआ, तो वहां पर स्तुति करने गए। ब्रह्मा भवच्च तत्र मुनि भी नारदा देवी देवे सानुचारम साके कृष्णम ऐडय। देवता लोग शिव जी को आगे करके ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के नारद आदि सब व्यास बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ वहां पर स्तुति करने गए। और वही कृष्ण जो वहां चतुर्भुज रूप दिखाए, यहाँ दुर्भुज रूप में जसोदा नंदन के रूप में। लेकिन इंद्र को एक अधिकार प्राप्त, वो स्वर्ग के राजा है, और ये भी देख रहा है कि ब्रजवासी लोग बहुत समय से हमको पूजा पाठ कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, बोले चलने दो, इसमें रोकना क्या है, फायदा हो रहा है हमारा, चकाचक हो रहा है। लेकिन जब उनके प्रभु आ गए,
जिन प्रभु ने इन ब्रजवासियों को अपना माना, सर्वस्व माना, माता पिता पुत्र सखा, किस भाव से नहीं उसको लोग प्रेम करते। जिन ब्रजवासियों कृष्ण इतना आदर सम्मान करते हैं, उनको अपना पूज्य मान के चरण छूते, चरण पूजा करते हैं, और उन ब्रजवासियों से इंद्र पूजा ले रहा है और कुछ बोलता नहीं, जानता है, लेकिन उस प्रभुता में एक मद है। जैसे कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत अधिकार पा लेता है तो उसका विस्तार करना चाहिए, और सच को कई बार दबा देता है, नहीं बोलता, स्पष्ट नहीं करता। सच बोलेगा तो फिर उसका पूजा पाठ बंद हो जाएगा। जबकि इंद्र को ज्ञान होना चाहिए कि ब्रह्मा जी, इससे पहले ब्रह्मोहन लीला हो चुका है, ब्रह्मोहन के बाद में इंद्र का मान वर्तन हुआ, और जहां पर ब्रह्मा जी मोहित होते हैं तो वहां पर जो कृष्ण के ऐश्वर्य, जो बछड़े बालक सबको देखे, कृष्ण सब बन गए, बिना उपादान कारण के स्वयं कृष्ण हो गए, कोई पृथ्वी बाजू आकाश का आश्रय नहीं। और ऐसा ब्रजवासियों के कितने प्रिय हैं। तो जिन ब्रजवासियों को ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे, तद भूरि भाग्यमी है जन्म किमपि अटव्यम जद गोकुले अपि कतमांध्रो रजोभिषेकम् जद जीवितं भगवान मुकुंदस अद्यापि जद पद रज श्रुति निर्गमेव। मेरा ऐसा कब सौभाग्य होगा कि मैं गोकुल में कुछ तिरलता पता बनूं, पहले भी कथा सुन। तो ब्रह्मा जी ब्रजवासियों के सौभाग्य को प्रशंसा करते, प्रणाम करते, अहो भाग्यम करके नंद गोकुल। और उन ब्रजवासियों से एक इंद्र उससे नीचे का अधिकारी है और पूजा ले रहा है। सुना है, जानता भी तत्व बड़ा एक स्थिति, एक कहावत है कि को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाही बदना। संसार में किसी को कुछ अधिकार मिल जाता है तो उस अधिकार को और बढ़ाता है, और अपना क्षमता, अपना सामर्थ्य बना के रखता है, छोड़ना नहीं चाहिए। जबकि नियम के अनुसार जब श्रेष्ठ है तो वहां पर मैं कौन हूं, सब उनके दास हैं, तो मैं आगे से आपका पूजा क्यों चाहूं? मुझे तो केवल प्रसाद मिलना चाहिए। प्रसाद में अधिकार है कि बिना भगवान का भोग लगाए खुद खा जाता हूं। ब्रजवासी पहले से परंपरा मान के आ रहे पूजा करके। तो कृष्ण इस पूजा को रोकना चाहते हैं कई कारण से। एक तो शुद्ध वैष्णवों को लिए भगवान का अतिरिक्त और कोई पूजा का विधान नहीं। जो कृष्ण का भक्त होते हैं वो किसी का दास है, किसी का ऋणी है, किसी का सेवक नहीं होता, क्योंकि भगवान की पूजा से सबकी पूजा हो जाती है। देवर्षि भूताप निर्नाम पितृनाम नम किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मन शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत कर। जो सारे कर्तव्य कर्म सब त्याग करके सर्वधर्मान परित्यज्य होकर के जो कृष्ण शरणागत हो जाए, फिर वो किसी का ऋणी, किसी का दास, किसी का सेवक नहीं हो, क्योंकि भगवान की पूजा से सबकी पूजा हो जाए। जैसे वृक्ष के मूल में जल डालने से सब पत्ता पत्ता को मिल जाए। जो भक्त नहीं है, जो वैष्णव नहीं है, जो कर्मी है और दूसरे जिसको फल चाहिए, वो लोग तो चलो इंद्र आदि को अधिकारियों को पूजा कर दे, लेकिन वैष्णव होने पर उसका एक अलग नियम होता है, उसका एक अपना अलग लॉ है। और ब्रजवासी भगवान भक्त के महावैष्णव है, इनके ऊपर इंद्र का शासन है, इंद्र इनसे पूजा लेगा, नियम से बाहर हो गए। और अगर ऐसी परंपरा अन्य परंपरा चलती रही तो शुद्ध भक्ति का हे हो जाएगा, प्योर भक्ति नष्ट हो जाएगी। और जो भक्ति धर्म है वो साधारण व्यक्ति स्थापित नहीं कर सकते। या तो भगवान करेंगे तो भगवान के समान ही उनका भक्त। धर्मम तो साक्षात भागवत परिणीतम न तो विदयो ऋषियो नापि देव न सिद्ध मुख्य विद्यालय
चाणुरा दया मनुष्य पिता। ये भक्ति धर्म है, प्योर भक्ति भगवान या भगवान के भक्त उसको स्थापित करते प्रचारित। इसको ऋषि और साधारण ऋषि मुनि गंधर्व मनुष्य सब नहीं जानते। यहाँ पर भगवान स्वयं उस प्योर भक्ति को, शुद्ध भक्ति को स्थापित करने के लिए करीब की अवस्था 7 साल हो चुकी है। समझदार है, पहले भी देखते हुए आ रहे हैं कैसे ब्रजवासी लोग आज के दिन इंद्र पूजा के लिए उन्मत्त हो जाते हैं, कितना भोग व्यंजन बना के भोग लगा। तो आज के दिन सुबह सुबह में देखे बड़े बड़े कड़ाही चढ़ गया और पूरी बूढ़ी सब बन रहा है, हलवा बन रहा है, खीर बन रहा है और तरह। कृष्ण देख कर जानती हुआ अनजान की तरह पूछ रहे, बाबा बाबा ये सब क्या हो रहा है? बाबा चुप। बाबा भी पूरा पूजा की तैयारी में सब सोच रहे क्या बनना नहीं बनना, बीच में आ गया बक बक करने और एक प्रश्न की झड़ी लगा दी। क्या उद्देश्य है, इसका क्या फल है, इस जग को हम क्यों करते हैं, क्या मिलेगा, किसकी पूजा होती है, वो कौन है, वो क्या कर सकता है। बाबा को सिर चकरा गए, इतना प्रश्न। अच्छा है कि आज इसको उत्तर न दो, चुपचाप रहो, आज पूजा कर लूं, बाद में इसको समझा दूंगा। लेकिन ये बड़े चतुर, जब बाबा कुछ नहीं बोले तो बोले, बाबा मुझे तो बता देना चाहिए क्योंकि मैं आपका खास बेटा हूं और बाप क्या करता नहीं करता बेटा को थोड़ा बता ही देना चाहिए। तो कल हम इस परंपरा को संभाले। अगर शत्रु हो और शत्रु पक्ष का उदासीन हो तो उनको ये बात नहीं बताना चाहिए, लेकिन मित्र हो और मित्र में अपना पुत्र हो तो मेरे से तो ऐसा कोई बात नहीं, आपको छुपाना चाहिए। बड़ा झुक्की तर्क दिए। अब बाबा से रहा नहीं गया तो बाबा समझा गया। वो पूरा श्लोक में बात कर रहे हैं, तत्व की बात कर्मकांड को बता रहे। बोले बेटा देखो, प्रजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्य आत्ममूर्त है। ये जो प्रजन्य मेघ है ये इंद्र के अपनी आत्मा है, उसकी मूर्ति है। वो इंद्र के लिए कार्य करता है, इंद्र के आदेशानुसार वृष्टि करता है। तेव अभिवर्षन्ति भूतानां जीवनम्, मेघ जो है प्राणियों के लिए जीवन जल बरसता है जिससे प्राणी सुखी होते हैं। अगर जोर से गर्मी पड़ रही हो तो सब सोचते कब मानसून आएगा, कब ठंडा होगा, कब सब जमीन हरा भरा हो जाए। तो जल जो है प्राणियों के लिए बड़े प्रिय होता है क्योंकि बहुत सी चीजें जल पर निर्भर है। जितना धान, खेती बाड़ी, पीना, रहना, कपड़ा धोना, स्नान करना इत्यादि सब जल से होता है। तो कितने प्रिय है और ऐसा प्रिय कार्य इंद्र करता है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। इनके अंदर में ये श्रद्धा, ये भक्ति, भाव इंद्र के प्रति बहुत पुराना हो गया, बहुत क्रोनिक है, अंदर तक घुस गया। क्योंकि जो व्यक्ति बाप दादा से परंपरा से कुछ मान के आता है तो बीच में उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जब हमारे प्रजन्य महाराज और दूसरे लोग कर रहे थे, मैं कैसे बंद करूंगा परंपरा। अभी भी गाँव में जैसे आज के दिन लोग एक प्रकार की परंपरा आज के दिन होता है, गौ पूजा, गौ पीड़ा, गोवर्धन पूजा, गौ पूजा, गौओं की पूजा करो, गौ को नचाते कूदाते कीड़ा कराते, पीछे से ऐसे पूछ कर देगा, गाय ऐसे उछलने लग जाए, खुद सजाते, उसको बोलते गौ पीड़ा, प्लेइंग विद काउ, काउ प्ले। और गौ में क्या करते हैं, अभी हमारी तरह गौ में आज के दिन क्या करते, गाय के आगे में ना
झुंड के झुंड गाय होती है और वहां पर सुअर शुक्र होता है ना, पीक उसके गला बांध के गाय के सामने फेंक देंगे और गाय उसको सिंह से मारेंगे और मार मार के उसको मार देंगे। ऐसे मतलब परंपरा जो बड़ा अजीब विभत्स भयंकर, लेकिन ये चला आ रहा है। जैसे स्पेन में बुल फाइटिंग चला आ रहा है, अभी कोई उसको रोकेगा तो मानेंगे नहीं। यहाँ पर ये परंपरा में रूढ़ हो गया, पर पक्का हो गया। तो कृष्ण उसको रोकना चाहिए। तो बाबा को जैसे किसी व्यक्ति को एक कांटा पैर में गड़ गया, चुभ गया और कांटा बहुत अंदर में घुस गया, बहुत अंदर में घुसने पर उसको निकालना इतना आसान नहीं होता। ऊपर है तो हाथ से पकड़ के खींच दे, लेकिन अंदर गया, टूट गया और पकड़ में नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे? उस कांटे को निकालने के लिए फिर एक दूसरा कांटा चाहिए, ऐसा पड़ा। और उस कांटे को निकालने के वहां पर उस कांटे से उसको ऐसे खोदो और निकालो। तो एक कांटा को निकालने के लिए दूसरा कांटा का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब क्या? हम कांटा को बहुत पसंद करते हैं? नहीं, कांटे से कांटे को निकाल करके दोनों कांटे फेंक दो। तो कांटा रखने का चीज नहीं होता, फेंकने का चीज होता। क्या करेगा कांटा? तो एक कर्म कांड को निकालने के लिए उसी प्रकार कर्म कांड रूपी कांटा का यहाँ पर कृष्ण ने प्रयोग किया। और कृष्ण कहते हैं एक कर्मवाद निरीश्वर शांत उसका प्रयोग कर रहे। कर्मणा जायते जंतु कर्म नैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नैवाभिधत्ते। कर्मानुसार व्यक्ति का जन्म होता है। जैसे हम अभी कोई कर्म किया, मर जाएंगे, लेकिन मृत्यु के बाद भी वो कर्म का संस्कार हमारे साथ जाएगा और उसी के अनुसार हमारा स्वभाव बनेगा, संस्कार बनेगा। और हम किसी भी जोनी में जाएंगे, पहले जन्म का संस्कार स्वभाव वहां पर जाएगा। अगर इस जन्म में सांप है तो अगले जन्म अगर मनुष्य होगा तो सांप जैसा ही बड़ा स्वभाव कर जाएगा। तो कर्म से व्यक्ति जन्मते, कर्म उसको फिर आगे संस्कार देकर फिर जन्म दिला देता है। और व्यक्ति सुख दुख जो कुछ मिलता है, भय अभय सब कर्म से मिलता है। ईश्वर क्या कर लेगा? ईश्वर भी उसी को फल देता है जो कर्म करते हैं, क्योंकि ईश्वर भी कर्माधीन है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो कृष्ण ईश्वर क्या देगा? ईश्वर स्वतंत्र नहीं। और सच में इंद्र आदि जो देवता हैं वो सब कर्माधीन है। अब जैसा कर्म करेंगे वो सचिव है, लाइक क्लर्क, सचिव, सेक्रेटरी टाइप में कर्मानुसार फल देंगे। केवल भगवान स्वतंत्र है, जो कर्म को जला भी सकते हैं और बिना कर्म किए किसी के ऊपर कृपा कर सकते। कुछ मत करो और वृंदावन में खड़े हो, वो परम स्वतंत्र। इसलिए उस परम स्वतंत्र भगवान को छोड़ करके भक्त लोग ये फालतू के भगवान की क्या पूजा करें? बाबा हम ग्वाले वैश्य, ब्राह्मणों का जीविका होता है वेदाध्ययन आदि, वेद पाठ प्रवचन। क्षत्रियों को होता है पालन शासन, पृथ्वी को रक्षा करना। और वैश्यों का जो जीविका है
वो है खेती करना, गाय पालना, व्यापार करना और ब्याज लेना, ब्याज पे पैसे चढ़ा के ब्याज लेना। लेकिन हम लोग केवल एक ही वृत्ति जीवन से कर रहे हैं, और वो है गौ पालन। हम ब्रजवासी गौ पालते हैं, इसलिए ना तो हमारा कोई नगर है, ना कोई गांव है, ना कोई घर है। हम तो जिप्सी हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा पहाड़ों में रहते हैं, वनों के बीच में। वहीं कहीं गुफा में या कहीं टेंट लगा के आज यहाँ कल वहां परसों वहां चरवाहे जैसे भेड़िया चराने वाले सब गाय बाकी वाले घूमते हैं, ऐसे हम घूमते हैं। इसलिए हमारा जो स्थान है आश्रय, वो वन है और पर्वत, प्रमुख रूप से वन में वृंदावन और पर्वत में गोवर्धन। और गोवर्धन में सब कुछ है, उन्हीं से हमारी जीविका चलती है। अगर आप मेरी प्रीति प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप सोचते हैं कि कन्हैया हम लोगों को खूब प्रेम करे, तो हमारा प्रीति पाने का एक ही उपाय। मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ, और जिनको मैं पसंद करता हूँ उनको अगर आप लोग पसंद करेंगे तो समझो कि आप इतने हमारे प्रिय हो गए कि उसका कोई शब्द नहीं। तो मेरे प्रीति के लिए गौओं की पूजा करो, गौओं का घास खिलाओ, उनको पानी खिलाओ, गुड़ दो आदि जो भी, और गिरिराज की पूजा करिए, ब्राह्मणों का आदर करिए, साधुओं को प्रणाम करिए, वैष्णवों को प्रणाम करिए, उनको पूजा करिए, उनको भोजन करिए, उनको दक्षिणा दीजिए। ऐसा करने से मैं प्रसन्न होता है। और जो बच जाए वो फिर दीन दुखियों में, चंडालों में, कुत्तों आदि पशु पक्षियों में बांट दो प्रसाद। क्योंकि जितना जो भोजन बनाए इस सबको बटोरिए और गिरिराज जी को भोग में लगा दिए। जितना जो बनाए जो बना रहे हैं, गिरिराज जी को खीर बहुत पसंद है, इसलिए खीर सबसे पहले बनाओ और बड़े बड़े बर्तन में भर के रख दो, 4-6 घंटा ठंडा हो जाए। खीर ठंडा होने के बाद रबड़ी की तरह, अगर उसमें बढ़िया से मेवा मिला रखे हो, बादाम काजू वाली सब, और पूरी सब्जी, दाल चावल कढ़ी, चेतन चरित्र आदि में और माधुर्यपुरी पादी जो अन्नकूट महोत्सव, इसमें बहुत वर्णन आता है, क्या क्या बनाए, कितने व्यंजन, गिन नहीं सकते। सुखदा साकाली भाजी, नालिका कुष्मा, डाली डलना, दुग्ध तुम्बी, दधी मोचाखन, मुक्त बाग, मांस वाड़ा, रोटिका गिरकाम, सस पुली, पिष्टक क्षीर पुली पायसा, कर्पूर अमृत के लिए रंभा क्षीरसार, अमृत रसाल अम्ल द्वादश प्रकार, लुची चीनी सरपुड़ी, लड्डू रसावली, भोजन करें कृष्ण है। ये सब व्यंजन बने। और तो दीदी तो कितने प्रकार के कटहल, मटर और कितने व्यंजन बन रहे हैं, कितने प्रकार के मिठाई। ब्रजवासी तो सुन के बोले भैया तो बड़ा आनंद उत्सव बता रहे, गिरिराज जी की हम पूजा करेंगे। गिरिराज तो हमारे बड़े प्रिय, हम तो दिन रात वहीं रहते, वहीं खेलते, वहीं विश्राम में। सब आनंदित हो गए।
और ग्वाल वाल तो नाचने लगे, जय जयकार कर, बोलो गिरिराज महाराज। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मन। दूसरा भजन कर, मेरा मन नहीं मानता है कि कृष्ण भी नहीं मान रहे, और जो कृष्ण नहीं मानते, कृष्ण को जो अच्छा नहीं लगता वो काम हम क्यों करें। इसलिए हम इंद्र पूजा नहीं करेंगे, गिरिराज पूजा करेंगे। बहुत कढ़ी बनाए, चावल बनाए, और बड़े बड़े छकड़ा में बैलगाड़ी में भर भर के गिरिराज में ले आए। पहले तो मानसी गंगा के जल से हरदेव जी का अभिषेक हुआ गिरिराज जी का, और गिरिराज जी सोचे कि सामान तो ले आए, लेकिन इतना सामान, इतना बड़ा बड़ा दोना पत्तल कहां से लाएंगे गिलास। बहुत सामग्री है, इसलिए गिरिराज जी अपने में ही, अपने शरीर में ही बड़ा सा प्लेट, ऐसे मानो कुंड प्रकट हो गए, बड़े बड़े कटोरा और बड़े बड़े गिलास, डाल दो इसमें भक्त को, जो है सब इसमें डाल दो। अभिषेक के बाद अन्न के पहाड़ बन गया, कढ़ी का कुंड बन गया, चावल का कुंड बन गया, दूध दही घी मक्खन का कुंड बन गया, भर गया, पूरी का पहाड़ हो गया, मिठाइयों को कौन मिले, सब गिरिराज जी के चारों तरफ सजाया गया। और जैसे गिरिराज जी को भोग लगाया गया, एकदम नैवेद्य पाण्यादिकम सब जो कुछ है, श्री गिरिराज आए नमः। गिरिराज जी बोले, भाई जितना माल लाए हो, 2 हाथ से तो काम नहीं चलेगा, 2 से कितना खाऊंगा, इसलिए 1000 पूजा 1000 मुख फाड़ दिए, चारों तरफ का मुख ही मुख हो गया, और जो आ रहा है पूरा के पूरा उठा करके स्वाहा कटाक। मधुमंगल बोला, बाप रे बाप, ये तो हमसे तेज निकल गया कन्हैया, मैं तो सोचता मैं खाने पीने में बहुत तेज हूँ, लेकिन ये तो हमसे भी जल्दी जल्दी खा रहा है। बोल दो 2 लड्डू तो कम से कम मेरे लिए रोक रख दे। आता है मधुमंगल, एक गिरिराज में गोवाला पोखर है, आज मधुमंगल कृष्ण के साथ गया सूर्य कुंड में पूजा कराने। कृष्ण बन गया पुजारी, और मधुमंगल भी उसके साथ सहायक बन गया, जो मंत्र को भूल जाएगा मैं बता दूंगा, और उल्टा पलटा मंत्र बोल के राजा रानी को पूजा करेगा। राजा रानी इस ब्राह्मण से बड़े प्रसन्न थे, और एक बड़ा सा लड्डू दे दिया दक्षिणा में, ये लेके बड़े प्रेम से बांधे, और ऐसे इधर मत देखना, लड्डू किधर दबा लिए, कृष्ण को भी नहीं दिया, एक अंगूठी दिए सोने को, उसको हाथ में पहन के सखाओं के बीच में आया। दाऊ जी देखे, बोले मधुमंगल क्या बात है, तुम दूर दूर रहते हो, जरा पास में आओ, इतना दूर क्यों, तुम तो मेरे मित्र हो। मधुमंगल समझ गया कि इसको पता चला, वो ऐसे बोला, नहीं ठीक ठीक, मैं ही ठीक हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम लोग ग्वाले हो, तुम्हारे साथ हम क्यों बैठेंगे, हम थोड़ा दूर रहेंगे। सो दाऊ जी गए और पकड़ के, दाऊ जी को कौन रोके, खींच दिए उसके लड्डू, अब खींचा तो सब सखा देखा, इतना बड़ा लड्डू, बाप रे बाप, अकेले सारे खाए वो, सब टूट पड़े और खाने लगे तो रोना शुरू कर दिया। मधुमंगल का लड्डू को खा जाए, रोने लग गया, अरे मुझ ब्राह्मण को मत मारो, हमने तो सारे अभी सबको श्राप दे दूंगा। ऐसे करने लगे, बाद में कुछ बचा टुकड़ा खाया पिया, ऐसे गिरिराज में मधुर मधुर लीलाएं होती रहती। आज मधुमंगल थोड़ा उदास है, कृष्ण बोले चिंता मत करो, आगे देखो गिरिराज क्या चमत्कार कर। तो जितना भोग लगाए तो उससे भी अधिक वहां पर सब प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान पूर्ण से पूर्ण को लेकर के पूर्ण रख देते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फिर क्या था, ब्रजवासी लोग सब पंक्ति में बैठ गए और जितना भी व्यजन था सब पेट भर करके पाए, जल पिए, डकार आया और बोले हम क्या करें। बोले सब गाय बछड़ों को सजाओ और सबको लेकर के ब्राह्मणों को, वैष्णवों को और मेरे प्रियजनों को प्रणाम करो, परिक्रमा करो और सबसे अधिक भक्ति चाहिए तो फिर गिरिराज जी की करो। सब मिलकर के गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। गिरिराज जी की झांकी अद्भुत है। एक बार जो गिरिराज जी के शरण में आ जाते हैं, एक बार उनको प्रणाम परिक्रमा कर लेते हैं, फिर वो माया का संसार का और चक्कर नहीं लगाते, वो गिरिराज जी के हो जाते। सब कीर्तन के साथ में गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। जय जय गोवर्धन, जय जय गिरिराज।